Hello everyone, welcome back to Plan Travel Explore. After a long time, we are with the Jaipur video today. First place we visited was Hawa Mahal, which is part of City Palace of Jaipur, and this contains 953 small windows and there will be lighting in the evening. The next place we visited was the Albert Hall Museum or Government Central Museum, which also functions as the State Museum of Rajasthan, and it is one of the oldest museum of Rajasthan. Next morning we visited Amer Fort, or which is also called as Sambhar Fort. This is the view of Amer Fort from the road. There are total 4 courtyards inside the fort and many other places. I'll show you one by one. यही है पन्ना मीना कुंड। दबंग थ्री फिल्म देखा है सलमान खान का? दबंग। हाँ। उसमें वो सोनाक्षी सिन्हा डांस करती है, कोई सी जगह का सीन है। धड़क फिल्म में वो वहाँ से पानी में कूदता है, इस जगह का। हाँ, धड़क। The name is because this pond is exclusively constructed for the tribal caste Meena by the Maharaja of Rajasthan. मंदिर के नाम से जाना जाता है, जगत मान सिंह के बेटे का नाम था। एक छोटा सा मंदिर था, ये जगत को क्या दादा? आपने वो देखा मोनोग्राम राजस्थान का, जिसपे एक लड़की और एक लड़का बैठा रहता है केमल के ऊपर में, पधारो मारो देश। नहीं, वो वहीं पे देखो, वो लग रहा है उसको राजस्थान। और राजस्थान का सिंबल, मोनोग्राम। ओके। So this is the beauty of Jagat Shiromani temple. Now we are entering the first courtyard of the fort. We are entering the first courtyard, which is also called as Jalebi Chowk or Jaleb Chowk, where the armies held victory parades under the commander and the royal families used to view it from the top. There were also stables for horses and also rooms for the soldiers at this place. This is the entry gate for the second courtyard of the fort. Now we are in the second courtyard, from where the royal family used to view the beauty of the parade of its army at the first courtyard, and also this contains Diwani Aam and Diwani Khas as usual, where the Diwani Aam is the place where king used to hear the grievances of the public, and Diwani Khas is where the king used to have the private meeting. The door what you can see now is the entry to the final or the innermost layer of the fort. What you can see now is the lake named Mahota. This is the water source for this fort. I recommend you to hire a guide here, otherwise you will miss many information about the places. Come on, let's go to the innermost part of the fort. Now we are in the last and innermost part of the fort. What you can see now is the third courtyard, and this is the fourth courtyard on the other side. The third courtyard is meant for the royal families and their attendants, and the last and fourth courtyard is for the royal ladies and their attendants. There were many rooms for the mother and wives of the king in the last courtyard.
What we see now is called Jai Mandir or Sheesh Mahal, which was decorated with the convex shaped mirrors so that they can glitter due to the candlelight at the night. So for more information about the places, please do check out the description section. गणेश पोल की जो प्रिंटिंग्स देखी थी नेचुरल कलर्स की, तो आज के जो 300-400 साल पहले वो प्रिंटिंग जो शुरू की गई थी, पहले वॉल्स पे की गई थी दीवारों के ऊपर, फिर उसके बाद उस प्रिंटिंग्स को शुरू किया गया था राजा महाराजाओं के कपड़ों के लिए। तो ये जो गांव बसाया हुआ है, रियासत में बसाया हुआ है, उस वक्त से लोगों को लाके मीना लोगों को यहाँ बसाया, तो उनको क्या है कि पेड़ों की नॉलेज थी, जो हर्ब्स होती है ना, जड़ी बूटियाँ, उनके बारे में। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, अपने खाने की सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, केले का पत्ता होता है, या मेहंदी का बाग है तो मेहंदी के पत्ते होते हैं, उनसे तैयार किए हुए कलर्स होते हैं। इस तरीके से वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, इनसे प्रिंटिंग्स की जाती है। नेचुरल कलर की जो प्रिंटिंग होती है, तो शिफॉन पे होती है, एक कॉटन पे होती है और एक सिल्क पे होती है। और स्क्रीन प्रिंट जो होता है वो सिंथेटिक्स पे होता है। फर्स्ट ब्लॉक होता है कि आउटलाइन बनाने के लिए, ये अपनों ने आउटलाइन बनाया। पीला कलर जो आप देख रहे हैं, कच्ची हल्दी है, नींबू का छिलका, सूरजमुखी का फूल और पीली सरसों, जो उससे तैयार किया हुआ कलर। ये आउटलाइन बनाया इसका फर्स्ट ब्लॉक से। सेकंड ब्लॉक जो होता है, इसके अंदर कलर्स भरने के लिए होता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे यहाँ, जो और भी सीनियर है बुजुर्ग, इसके अंदर के 3 ब्लॉक्स और लगा सकते हैं। ये वेडिंग में जो एक सजा धजा एलिफेंट होता है, वैसे पूरा कलरफुल एलिफेंट हो जाता है, वो आपको रेडी कलेक्शन जो ऊपर आर्ट है उसमें मिलेगा। देखिए 2 ब्लॉक का, ये तो वो व्हाइट कपड़े पे प्रिंटिंग। आप ऊपर जाएंगे, अलग अलग आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल पानी जो अपन घरों में यूज लेते हैं पीने का, अभी अपन कपड़े पे डालते हैं, कोई रेट नहीं होता है। इस पानी के अंदर ये हर्बल पाउडर डालेंगे, इसमें अनारदाना होता है, अरीठा होता है, गन्ने का रस होता है, कुछ जंगली छाल होती है पेड़ों की। पानी में कोई कलर नहीं आएगा। आया कपड़े को इसमें वॉश करते हैं अपन, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, ग्रीन और येलो कलर एज रहता है, बहुत फास्ट। लेकिन कोई भी कलर अनमेच नहीं हुआ, ग्रीन ग्रीन की जगह, येलो येलो की जगह। हाफ आवर इसको ड्राई कर लेते हैं धूप के अंदर अपन, दिस इज मोर ब्राइट। क्योंकि नेचुरल कलर है, जितना धूप में सुखाएंगे उतने ब्राइट होते हैं। सर अभी सूखा नहीं है, गीला, आप रेड कलर को रख करके देखिए, निकल तो नहीं रहा रेड को नहीं। ये चीज़ दिखाने का अपना मेन मोटिव ये है कि आरपीडीसी का है, पर्सनल प्राइवेट नहीं है किसी का। टूरिस्ट गेस्ट आते हैं, कहीं से कुछ ले जाते हैं, एक वॉश में सब कुछ खराब हो जाता है, नाम जयपुर का बना हुआ, इसलिए इसको गाँव में खोला गया। यहाँ तक तो बहुत रेयर में पहुँच पाते हैं, क्योंकि भाई उधर किसी विलेज तक कोई पहुँच नहीं पाता है, कोई मिल जाता है तो पहुँच जाते नहीं। तो आपको यहाँ पे जो भी आइटम देखेंगे, आप हमारे यहाँ 100 ग्राम गुड़ का रजैया का फेमस होता है। Now we are going to the next place, that is Jaigarh Fort. Fort is situated in Chilka Tila, which is also known as Hill of Eagles, in the Aravalli range. This is built by Raja Jai Singh II in 1726 to protect the Amer fort. We can also drive our vehicle inside the Jaigarh Fort. This is Jaivan Canon inside the fort, and then it was the largest cannon on the wheels. You can also visit Nahargarh Fort, which is near to this place. This is Jal Mahal, which is on the way to the other forts. Next day we visited one more place called Sambhar Lake, which is India's largest inland salt lake and which is around 80 kilometers from Jaipur.
So this is all about 5th and 6th day of our North India tour and last episode in this series. If you like this series and this video, please hit the like button and share with your friends and family. And thanks for watching Plan Travel Explore.